Hello guys, good morning from Argentina. Today is my second day in this country. तो स्वागत है आप लोगों का इस नवी वीडियो में। आज हम लोग भाई एक वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं घूमने एंड दिस वाटरफॉल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, 3 times more than Niagara Falls in Canada. So let's go and explore the waterfall near Argentina and Brazil border. The name of this waterfall is Iguazu waterfall, which is like the native language, almost I think extinct, but still they are using the name for the waterfall in the local language. So 80% of the waterfall is on Argentina side and then 20% on the Brazilian side. आज हम लोग अर्जेंटीना वाली तरफ से इस वाटरफॉल को देखने के लिए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं बस यो आई गो बाय बस। वो बंदा बोल रहा मैं भी वांट टू गो बाय प्राइवेट कार। आई वाज लाइक नो, आई एम गोइंग बाय बस। सो सी दिस इज़ लाइक अ टूरिस्ट टाउन बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे कम हेयर फॉर द वाटरफॉल। आप लोग देख सकते हैं भाई, ये है वाटरफॉल जो पोस्टर में लगा हुआ है, बट असलियत में भाई इससे भी सुंदर दिखता है। In real life it's much more beautiful and I think it's even bigger than Victoria Falls. Victoria Falls stretches 1.7 kilometers something, but this is 2.7 kilometer long. Imagine that, in the width this is 2.7 kilometer. So I'm going towards bus station. Let's go. Then we're gonna reach the national park. Only inside the waterfall area. See, this is like the national park. It's quite maintained from this side. It doesn't look wild at all right now, until now. So I just paid $30 to the entrance for the waterfall. I hope it's fun. So guys, right now we are in a train in the waterfall. This is the ticket actually. ये मेन वाटरफॉल की तरफ लेके जाएगी, जिसको डेविल थ्रोट भी बोलते हैं। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होता है। अगर उसके बाद हम टाइम से वापस आ पाए तो बोट में भी जाएंगे, अगर नहीं आ पाए तो पता नहीं। एंड बोट वाला बंदा एक्चुअली मेरे को कह रहा था कि 50-50 है भाई, क्योंकि वाटर लेवल थोड़ा कम है, तो पता नहीं बोट जाएगी कि नहीं जाएगी। सो नॉट सो श्योर, बट टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो। तो भाई फाइनली हम लोग ट्रेन से उतरे हैं अभी और एक ट्रेल पे चल रहे हैं जो कि यहाँ के सबसे बड़े वाटरफॉल पे जाके रुकेगी। तो ये देखिए भाई, ये इग्वाजू रिवर है, ये जाके वाटरफॉल बनता है। अभी पानी के लेवल कम है, तो बोट वाला कह रहा था कि भाई क्या पता बोट टूर नहीं जाएगा क्योंकि पानी बहुत कम है इस टाइम। फिर से आना पड़ेगा हमें किसी टाइम, बट सही नज़ारे हैं भाई। मेरे को ज़ाम्बिया की याद आ रही है लिटरली। दिस लुक्स लाइक ज़ाम्बेज़ी रिवर इन ज़ाम्बिया। लाइक आई रियली रिमेंबर राइट नाउ ज़िम्बाब्वे एंड ज़ाम्बिया, सो सिमिलर। You see next to us, see right here, and it's not just one trail, it's like flowing so many kilometers, and the waterfall span across 2.7 kilometer as I told you. So this is quite a big river, and the lush green that you see behind me, it's called subtropical rainforest, very similar to Asian flora and fauna I can feel. So यहाँ के जो पेड़ पौधे आप लोग देख रहे हैं ना भाई, ये हमारे वहाँ उड़ीसा, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया वैसी वाइब्स दे रहे हैं मेरे को। ये जो पेड़ पौधे हैं भाई, ये अफ्रीका से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, बट जो ये नदी है वो ज़ाम्बिया से मैच कर रही है काइंड ऑफ। तो बड़ा यूनिक सा लैंडस्केप है भाई यहाँ पे। अब
अभी हमें 15-20 मिनट चलना है, फिर हम डेविल थ्रोट पे पहुंचेंगे, जो यहाँ का सबसे बड़ा झरना है। देखिए भाई, फिर दोबारा से शुरू होगी नदी। तो ये बहुत बड़ी नदी है एंड वाटरफॉल ही अकेला भी 2.7 किलोमीटर का है। तो गजब, चल के देखते हैं। इस टाइम पानी का जो फ्लो है वो थोड़ा कम है, तो बोट वाले ने बोला है कि भाई मे बी कि बोट नहीं जाएगी आज। बट लेट्स सी, लुक एट दिस अगेन। आप लोग ये देखिए भाई, ये फिर से नदी शुरू हुई एंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ख़त्म होती है, थोड़ी देर के लिए मिट्टी सी बनी हुई है, फिर उस तरफ फिर शुरू हो जाती है। सो वेरी यूनिक एंड वेरी ह्यूज। This is Iguazu River in Argentina. 80% of the waterfall is in Argentina and 20% in Brazil. I hope you can hear the sound, and it's quite good. It's not as vast as Victoria Fall in the amount of water that comes above, but as per the width, it's bigger than Victoria Falls. Wow, look at this. Oh my god. I cannot show you right now. Wait a little. It's good, man. Quite nice. Oh my god. In Victoria Falls you will be wet. From above where I was walking, I was already wet. This is not, thundering that much, but still it's quite good. Wow. Look, even the water is flowing from this side also, so even this is like a waterfall. This is so great. Oh my goodness. That's insane. Wow. It's huge. And this is the flag of Argentina right here. Come back alive if you go here. Look at this water, man. Yo, wow, look at this. Wow, there are like so many waterfalls here, and it's 2.7 kilometer in the width. So guys, this is the food I'm eating. So it's like a buffet area, you see right here, and they have some vegetarian options. So that's about it. Food is not so great in Argentina. It's very basic and everything is not fresh. I can feel the taste that it's not fresh. But yeah, few days or few months actually we have to eat such food. Which is so sad. I miss organic food of Africa so much. I swear to God. Look at this, man. Nothing is mostly not fresh and organic. But yeah. So guys, I'm back in town in Argentina, Iguazu. एंड अगर आप लोगों को मैं यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह दिखाऊं तो यार आपको लगेगा कि भाई ये पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर है यहाँ पे एक्चुअली। मतलब पूरी वैसी वाइब्स आ रही हैं जैसे इन लोगों ने बिल्डिंग, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट बना रखे हैं, यूरोपियन अमेरिकन वाइब्स। बट जो यहाँ का वेदर कंडीशन ये सब है, पेड़ पौधे हैं, वो भाई बहुत एशिया की वाइब दे रहे हैं अर्जेंटीना में, इस साइड का अर्जेंटीना। I know in Patagonia it's very cold. It's mountain area, more like
Tibet, Europe kind of vibe, but this one is very Asian, like tropical vibe. तो यहाँ पे भाई बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये यूरोपियन आर्किटेक्चर, ये सब मतलब बात ही नहीं बन रही. Good morning. Today is second day of our trip, and I think I have to come back here again for the waterfall. This time it was not so much fun. Maybe better to come around March and February. That's much better time. So maybe one day again. And right now I'm at the bus station here in Iguazu town. We are going to the airport. So I bought the bus ticket like for 8,000 Argentinian peso, which is $5 or $6, and Uber was like $16. So we saved up to $10, I think so. And 2 days before I was trying to book the bus from this town to Buenos Aires, which is the capital I think of Argentina, and the bus ticket was like $89, which is 7,000 rupees something. Then I checked the flight price and I got the flight for like Indian 5,400 something. So flight was 2,000 rupees much cheaper. That's crazy. So if you are coming to Latin America, make sure to book your flights in advance. Flights are much cheaper in this part of the world. So it's cheaper to travel by plane than by buses here. So that's like a travel hack on this continent. So I just realized that in these countries you have to be careful how they sell the ticket for bags and everything, because it's like a hidden scam, and then you can apply for refund in some ways, but it wastes your time. So it's better to be careful, which is quite crazy because this doesn't happen in Asia most of the time. Then these people, they say they are more developed than us. That's crazy. You know, in Asia if we have the ticket sold and it's written, okay, this is your food, this is your baggage, da 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 da, that's it. And these people, they are doing hidden things with agencies, selling cheap tickets, all these airlines, and they say we in the great Americas are developed people. That's stupid. I think Asia is much more advanced right now and much more better. Look at this, man. Wow, this river is looking so great. This is Iguazu River. Let me zoom in. This is the river that makes waterfall. Wow. Guys, this is the airport in Buenos Aires, and one thing I like about this airport, that it's very near to the center. So it's not far away. It's like 5 kilometers inside the center area. So good. So we are going to the hostel now, and tomorrow I have visa appointment for Uruguay. तो कल हम भाई वीज़ा लेने के लिए जाएंगे.